Yes, students, a very good morning to all of you. And we are going to start this session, especially for understanding the concept of P&L appropriation. But two questions were left. Question number 12 रह गया था और 13 with regard to calculation of interest on loan. तो पहले हम इन दो questions को करते हैं and thereafter we will solve the other questions. Right? So question number 12 is very much there on your screen. Atul, Jetha and Tarak are partners sharing profits equally. Jetha was given loan means by the firm means loan by the firm. This is an asset on 1st July 2024 of rupees 6 lakhs. The books are closed on 31st March. Pass the journal entries if rate of interest is not agreed upon. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्रीड ही नहीं है पार्टनर्स में तो बताइए क्या रूल बताया गया है विद रिगार्ड टू लोन गिवन बाय द पार्टनर. नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. फर्स्ट पॉइंट का आंसर है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. व्हाई? लोन taken by the firm पर तो 6% per annum applicable है, but loan given to the partner पर there is no interest allowed. First point solved. Now comes the second point. Second point says rate of interest is charged at 10%. Okay, so we have to give journal entries in this question. First part very simple. We have understood that there is no interest to be allowed, and in the part B of question number 12 we will pass the entries. तो सबसे पहले एंट्रीज की शुरुआत करते हैं. 1st of July को फर्म ने लोन दिया किसको? टू द पार्टनर जेठा. So it will be Jetha loan account debit. Jetha's loan account debit. Jetha's loan account debit to bank account. Being loan advanced. Being loan advanced on 1st of July 2024. Okay. We will pass the entry on 1st of July. Be 6 lakhs. Mentioning clearly the what? Narration. Being loan advanced to Jetha. Okay. This is the first entry. Thereafter, we will pass the next entry for interest. Now for interest, we will first calculating the interest and then we will be making it charged. On 31st March 2025, we will charge the interest. Next year will happen. As the year will end on 31st March, so on 31st March 25 को mention कर देंगे कितना interest हमने charge किया. What journal entry do we pass? Do remember children that the journal entry for charging interest is from his capital account. Jetha's capital account debit, because partner becomes the debtor of the firm for interest, क्योंकि partner ने firm को interest देना है. Jetha capital account debit to interest on loan. Interest on Jetha's loan. And we will post the amount of interest. Books are closed on 31st March. So how many months interest we should calculate? 6 lakh. What is the percentage mentioned in the question? It is 10% per annum. It is an agreed rate. For how many months? For 9 months. So 60,000 into 9 by 12. How come we got 9? From 1st of July to 31st of March, it comes in total 9 months. Okay, and it is going to be 45,000 rupees. Simply, we will post the entry 45,000 being interest charged. And ये हमारी income है. Being an income, we will credit it to profit and loss account. तो क्या entry आएगी last? Interest on loan account debit. Interest on Jetha's loan account debit to profit and loss. Being interest account now closed with 45,000. Simple to understand. But loan given वाले point में chances of mistakes are always there. So be careful while passing the entries. Next and last question. Parul, Paresh and Rahul are partners in a firm. Firm gave loan to Rahul. Again, it is a loan advance wala concept on 1st of February of rupees 6 lakhs. 1st February. Please be careful about the dates. Dates are very, very important. Okay. इंटरेस्ट वॉज अग्रीड टू बी डिवाइड एट द रेट 6% पर एनम. 6% के रेट से फॉर्म ने इंटरेस्ट चार्ज करना है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते. लोन टेकन पर इंटरेस्ट लेते हैं, लोन गिवन पर इंटरेस्ट नहीं लेते. राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू February 2025. तो एक महीना यानी कि 1st February 28th February 1 मंथ का इंटरेस्ट पेड हो गया है चेक से. वी हैव रिसीव्ड, द फर्म हैज रिसीव्ड ऑन 5th of March ओनली. इसकी एंट्री हम बनाएंगे. बैलेंस वॉज पेड बाय हिम ऑन 5th of April. वो बैलेंस हमने पेड नहीं किया है, उसको हम ड्यू करके छोड़ देंगे. राइट. So let us calculate interest. First of all, 6 lakh का कितना परसेंट? Let us first calculate the interest so that we should feel comfortable while solving the question. एक वर्किंग नोट में हम सॉल्व कर लेंगे कितना इंटरेस्ट निकलकर हमारा आए. So let us calculate quickly the amount of interest. What is the interest to be calculated now? 6 lakhs. 6%. It's mentioned in the question. Okay. And for 1 month it is paid because हमें पे करना था 2 months का.
तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो बनता है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1 फरवरी से लेकर और 31 मार्च तक, इट इज 2 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट बनता है। ओके, तो 36,000 एंड 6 इट इज 6,000। टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स इज 6,000, जिसमें से 1 मंथ का पेड हो गया। तो 1 मंथ मीन्स 3,000 हैज बीन पेड एंड 3,000 रिमेन अनपेड, दैट वी विल चार्ज। तो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे 1 फरवरी, 1 फरवरी 2025 को कितने रुपीज का लोन हमने दिया, हाउ मच लोन वी हैड गिवन टू पार्टनर राहुल। तो राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट, राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट, जब लोन देंगे तो लोन को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ऑन 1 फरवरी लोन हैज बीन गिवन रुपीज कितना, 6 लाख, डन। एंड क्विकली वी विल पास द नेक्स्ट एंट्री। ऑन 5th March we have paid the interest, we have received the interest, Rahul paid the interest to the firm, तो फॉर्म ने रिसीव किया इंटरेस्ट, सिंपल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, दिस इज द सिंपल एंट्री वी विल रिसीव फॉर 1 मंथ। तो 6,000 इज फॉर द होल ईयर एंड फॉर 1 मंथ इसका हाफ कर दीजिए, 2 मंथ्स का 6,000, तो 1 मंथ का इट विल बी बीइंग 1 मंथ्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, 1 मंथ्स in that is February, okay, received from Rahul, 1 month interest, 1 month interest received. Next entry will be on 31st of March, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, that we will charge from his capital account or from which account, from his loan account, undoubtedly from his capital account or current account depending upon the nature of the question, if the capitals are fixed. So Rahul's capital account debit to interest on loan, these are the entries which we are doing right from the beginning of this concept, तो उसको आप देख सकते हैं। 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट हम ड्यू करके छोड़ देंगे और फिर इस टोटल इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे कौन से अकाउंट में बताएं, 31 मार्च को वी विल क्रेडिट द होल ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट एंट्री टू बी पास्ड, इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन राहुल, हर जगह राहुल लोन लिखे तो और भी अच्छा रहेगा इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल इंटरेस्ट हम क्रेडिट करेंगे 3 + 3 6,000। So simply we are able to close the interest on loan का account, right? Well children, after this immediately we come to the next topic of the chapter which is very very important from the examination point of view, सबसे ज्यादा पूछते हैं, that is profit and loss appropriation account। तो इसका concept समझ लो पहले आप, what is profit and loss appropriation account। देखिए 11th क्लास में we have done trading account, profit and loss account। trading account में हमारा gross profit आता था और profit and loss account used to give us net profit or net loss। till trading and profit and loss we are clear in 11th class। So now in 12th class we are going to understand profit and loss appropriation account। what is profit and loss appropriation, it is an extension to profit and loss। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम फर्दर एक्सटेंशन देते हैं, एक्सटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड कर दे एक पार्टनरशिप फॉर्म स्पेशली, तो दैट अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट बनाते क्यों है, व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड to calculate net divisible profits, it is prepared to calculate net divisible profits between the partners, divisible profit between the partners। तो पार्टनर्स में फाइनली कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब what do we record, what is the meaning of appropriation, this you have to understand very carefully। but before we go for the preparation of before we go for understanding for the concept of P&L appropriation account and its format, first understand the meaning of two very important things, that is charge against profit, charge against profit, and one more thing, what is that, appropriation against profit। this is very very important to understand children, because if you will not understand this, that will remain a confusion for you। appropriation, charge against profit, and appropriation out of profit। So this concept is very very important to understand by all of you, because this is the most important part of profit and loss appropriation। charge क्या चीज है, expenses which must be paid, which must be paid by the firm, मतलब irrespective of loss, irrespective of profit or loss, okay, which must be paid by the firm, पे करना ही करना है, उन खर्चों को, उन expenses को हम कहते हैं charge against profit, okay। and what is appropriation against profit, so appropriation against profit means those expenses which are paid only when profits are available, only when profit are available, if the profits are available
then it's fine, we can pay it off, otherwise we don't pay it off to the partners. कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या हो सकते हैं, लाइक नंबर वन एग्जाम्पल विच वी हैव ऑलरेडी डन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक ऐसा एक्सपेंस है कि पार्टनर अपने लोन के लिए फर्म का क्या है, क्रेडिटर है, उसके लिए वो फर्म का ओनर नहीं है. तो नंबर वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. नंबर टू इज रेंट पेबल टू पार्टनर. रेंट पेबल टू पार्टनर, कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट करी है पार्टनर ने अपनी फर्म को, तो वो एक्सपेंस जो है वो भी एक चार्ज है, वो पे करना ही करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट हो या लॉस हो, मगर पे होगा ही. और एक तो हम पहले से ही जानते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते थे, मैनेजर्स कमीशन. ओके, ये मैनेजर तो वैसे भी एक आउटसाइडर है, ही इज नॉट द पार्टनर. तो ये एक्सपेंस वो है जो कि पे करने ही करने हैं. एंड व्हाट अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो खर्चे जो फर्म तब पे करेगी जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, सैलरी पेबल टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन और एनी बोनस पेबल टू पार्टनर. ये सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तभी पे होगा जब हमारा फर्म को प्रॉफिट होगा. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर और एनी बोनस पेबल टू पार्टनर, एनी रेम्यूनरेशन यू कैन से, और क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व. भाई रिजर्व तो वैसे भी हम तभी क्रिएट करेंगे जब प्रॉफिट होगा. इफ देयर इज नो प्रॉफिट, नो क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व इज पॉसिबल. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन. ये कांसेप्ट आपको समझना है. और प्रॉफिट एंड जो चार्ज हमारा होता है, दिस इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एप्रोप्रिएशंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो अब द कांसेप्ट ऑफ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, होप. सो एक बार हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं which will make you further clear about the things. This is the simple format of profit and loss appropriation account, students. Profit and loss appropriation account का format है particular amount करके. Profit and loss appropriation account, और under this we write for the year ended. बैलेंस शीट में लिखते हैं हम as at, इसमें लिखते हैं for the year ended 31st March, जिस भी ईयर के लिए हम बना रहे हैं. ओके, अब ये अकाउंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड हाउ डज द अकाउंट गेट स्टार्ट एंड विद व्हाट फिगर्स वी क्लोज द अकाउंट. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ हमारे पास रेडी होगा. उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट जो अगर आया है फर्म को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं. ओके, दिस इज द नेट प्रॉफिट. बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि कुछ एक्सपेंस जो चार्ज है, चार्ज में क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अभी आपको बताया गया. जितने भी चार्ज अगर हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हम नेट प्रॉफिट से माइनस करते हैं. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेबल, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट इन सिलेबस ऑफ क्लास 12th. देयरफॉर रेंट पेबल टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करते हैं उसको माइनस, एंड यू शो द अमाउंट आउटसाइड. ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो, और अगर लॉस है तो लॉस के केस में फर्म इधर ट्रांसफर करेगी नेट लॉस, और एज यूजुअल जो ये हमारे चार्ज है इन चार्ज को माइनस करके दिखाएगी. ओके, ऑन द डेबिट साइड वी राइट लॉस, ऑन द क्रेडिट साइड वी राइट प्रॉफिट, राइट. देन ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर कंसीडर्ड, व्हिच आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशंस. अब एप्रोप्रिएशंस में मैंने आपको क्या क्या नाम बताए. सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. अगर पार्टनर्स ने अग्री किया है सबने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें चेक करना होगा कि जो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आता है, इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं तो नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड. ओके, ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी. फॉर एग्जांपल, ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आएगा, दैट वेयर शैल बी पोस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच वी मस्ट नो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा ए और बी के या तो कैपिटल अकाउंट में, अगर सिर्फ कैपिटल वर्ड दे रखा है, ए कैपिटल दिस मच, बी कैपिटल दिस मच, और अगर हमें दे रखा है कैपिटल आर फिक्स्ड, तो ए के करंट अकाउंट में पैसा जाएगा इंस्टेड ऑफ कैपिटल. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है ए और बी के, और इट कैन गो टू देयर करंट अकाउंट्स एज वेल. तो कैपिटल अकाउंट्स और इट कैन बी करंट अकाउंट. ये बात हर एप्रोप्रिएशन पर एप्लीकेबल होती है. ओके, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अमाउंट इसका अंदर लिखा जाएगा और फाइनल अमाउंट दोनों का टोटल करके बाहर आ जाएगा. दिस इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग. अकॉर्डिंगली वी विल राइट सैलरी. अब सैलरी मान लीजिए सिर्फ बी को मिलती है, तो बी के या तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर किस में जाएगा, करंट अकाउंट. करंट में कब जाएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड होंगे. ओके, दिस इज हाउ वी विल पोस्ट. और ये ईयरली सैलरी होती है, सपोज 5000 पर मंथ है तो इनटू 12 करना इज मैंडेटरी. विदाउट मेकिंग इट यू कैन नॉट गेट द करेक्ट आंसर, राइट. सैलरी बी को भी ए को भी दोनों को मिल सकती है, डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट. ओके, सैलरी हो सकती है, इट कैन बी कमीशन ऑल्सो टू द पार्टनर, नॉट मैनेजर कमीशन बट कमीशन टू द पार्टनर.
It can be commission to the partner. It can be bonus to the partner. It can be anything to the partner, right? So all these two items, most importantly, we show it on the debit side of the partner's capital, on the debit side of the profit and loss appropriation. Next, and very important to understand, is general reserve. Reserve तभी create होगा when there will be a profit, और अगर no profit तो no general reserve account will be created. अब जनरल रिजर्व किस पे क्रिएट हो सकता है, दिस कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ. बट जनरल रिजर्व इज द रिजर्व विच इज एन एक्सपेंस बट इन द कैटेगरी ऑफ एप्रोप्रिएशंस. और क्रेडिट साइड पर फर्म को एक मेन इनकम होती है पार्टनर से, और वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो जो पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं अपनी प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उस पर फर्म चार्ज करती है. सपोज करिए ए और बी दोनों ने विड्रॉ किया, तो ए के कैपिटल में जाएगा पैसा या फिर उसके करंट अकाउंट में जाएगा. ऑल डिपेंड्स के क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है. ओके, it will go to their respective capital or current accounts. Simple to understand. क्योंकि फर्म चार्ज करती है उनसे जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो पार्टनर्स, एंड वी हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द फर्म. एंड पार्टनर्स ने अगर फर्म को इंटरेस्ट पे करा तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इनकम. ओके, तो दिस इज हाउ ऑल दीज इंपॉर्टेंट आइटम कम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं. इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स, द आंसर कम्स एज टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट. ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आती है, दिस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इसी को कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. अब वही ए और बी अपनी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स, आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट्स. ऑल डिपेंड्स व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. ए और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए. इफ इट इज अ केस ऑफ डेबिट साइड मोर, देन वी विल बी ट्रांसफरिंग इट टू देयर क्रेडिट साइड. मींस ऑन दिस साइड वी विल शो द लॉस इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड. अगर तो बाय लॉस कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर. वैसे तो लॉस आना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि फॉर्म कभी भी एक्सपेंस appropriations can never be more than what? A is capital oblique current, B is capital oblique current, right? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके we will post it outside. This is how we prepare the profit and loss appropriation. At a glance you can see डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंस जो फर्म सब पे करती है जब फर्म को प्रॉफिट होता है, एंड क्रेडिट साइड पर ये एक इनकम आती है. याद रखेंगे इसको हम. अब जनरल रिजर्व की क्रिएशन से रिलेटेड पॉइंट समझ लीजिए आप. जनरल रिजर्व general reserve general reserve can be created. General reserve can be created on the following basis. On the following basis. अब इसमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम में जनरल रिजर्व क्रिएट करने के लिए. ए, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट्स. ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट. तो जितना भी प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये नेट प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट विच वी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रेट अपॉन 100. दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द जनरल रिजर्व, और हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा. दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अगर डिविजिबल प्रॉफिट पे वो कैलकुलेट करने को कहेगा आपसे, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट पर लिखा है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम इस पर ऐड कर देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल. डेबिट साइड के टोटल में क्या क्या आ सकता है, आईओसी आ सकता है, सैलरी आ सकता है, लेस ऑल एप्रोप्रिएशंस. लेस ऑल एप्रोप्रिएशन, जो भी हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं उनको हम माइनस कर देंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा. ओके, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. दैट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट. अब उस डिविजिबल प्रॉफिट का जो पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका परसेंटेज 10%, 5% जो भी है उस तरह से नहीं, यानी कि टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट कर देंगे, जो निकल कर आएगा उसका 10%. लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, इफ दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो फिगर तो हमें नोन नहीं है. नेट डिविजिबल मींस आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर कैलकुलेटिंग रिजर्व, ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट. अगर जो नेट वर्ड भी उसने यूज कर लिया है स्टूडेंट्स, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि यही जो डिविजिबल प्रॉफिट आपने लिया है ऊपर, क्योंकि नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारे पास अवेलेबल होगा नहीं, यही डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो आपने प्रॉफिट निकाला है, दैट इज डिविजिबल इनटू रेट अपॉन एब्सोल्युटली राइट 100 प्लस रेट. वही मैनेजर कमीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आफ्टर कैलकुलेटिंग रिजर्व वाला वैल्यू को कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो सिंपली वी विल यूज द फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट. सिंपल याद रखिएगा, सो दैट यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन.
तो ये 3 पॉइंट्स कैलकुलेशन के थे जनरल रिजर्व के, जो आपको याद रखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन. After this, quickly we calculate, we solve the questions so that we can understand the whole thing at a glance. Question number 14. Vinod and Mohan are partners. Vinod capital is 1 lakh. Mohan capital is 60,000. Capital given है हमारे को दोनों partners की. Interest on capital payable है 6%. It is an appropriation. We know very well. 1 lakh का 6% and 60,000 का 6% विनोद और मोहन को दे देंगे. विनोद को सैलरी भी एग्रीड हुई है 3,000 पर मंथ की, यानी कि पूरे ईयर की कितनी हो गई 36,000. नेट प्रॉफिट इज 80,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो नेट प्रॉफिट इज 80,000 rupees. So quickly we will solve this question, which is the question number 14 from your own book. Profit and loss appropriation account year given नहीं है. We will be just posting it in the same format the way I have explained to you. Format आपके सामने ready है. If you will solve simultaneously while watching this session, it will be the best thing for you to practice accounts. By profit and loss account करके net profit transfer कर देंगे, which is given 80,000. कोई भी हमको interest on partner loan वगैरह given नहीं है, so nothing to minus. So simply we will transfer the profit and loss account से net profit. Okay, this is the first thing we solve. And on the debit side, we will post all the appropriations. Number 1 is interest on capital. Both the partners, Vinod and Mohan, transfer कर देंगे इनके capitals में. Vinod capital and Mohan capital में transfer कर दिया जाएगा. That will be कितना percent? It is saying 6%. So we will calculate 6% quickly, and we will be able to get the correct answer. So it will be 5%. 1 lakh 6% is 6,000 and 3,600. 60,000 6%, 3,600, 9,600 का खर्चा आ गया. एक हमारा एप्रोप्रिएशन और है, सैलरी, एंड सैलरी विल बी पेड टू विनोद. तो वी विल पोस्ट इट टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, बाय डिफॉल्ट कैपिटल में ही ट्रांसफर करते हैं इंस्टेड ऑफ करंट अकाउंट. इट इज 3,000 per month written in the question, per month, and we prepare appropriation for the whole year 36,000. All accounts are to be closed. Okay, so from 80,000 rupees, credit side is greater, it will be a case of net divisible profit. जो निकल कर आता है, this is called what? Net divisible profits. Final amount. So we will be posting the profits transferred. Profit transferred to capital accounts. To Vinod capital and to Mohan's capital. Mohan's capital. Let's post the amount. अच्छा, 30, 45 for 600 means 46 and 34 400 is the answer, I think. Yes. So profit sharing ratio is not given. बड़ा ही important aspect क्या है? When PSR is not given. What is the concept? When PSR, profit sharing ratio, is not given, then profits are shared equally. Then profits are shared equally between the partners. They are considered as equal partners, right? So half distribute कर देंगे, 17,200 and 17,200. This is how we'll close the question. Next question. XYZ are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. It is written clearly 2:2:1. So 2/5, 2/5, and 1/5. Fixed capitals, most important word. Fixed capitals of the partners were X rupees 5 lakhs, Y rupees 5 lakhs, and Z rupees 2,50,000. The partnership deed provides the interest on capital to be allowed at 10% per annum. Z is to be allowed a salary of 20,000 per month. That means 12 करेंगे तो 2,40,000. IUC भी agreed है 10%, और Z की salary 20,000 per month agreed है. Profit of the firm for the year ended 31st March 2025 after Z salary. After Z salary means Z की salary इसमें से minus हो चुकी है. That is 4 lakh rupees. Profit हमारा आ रहा है Z की salary कट करने के बाद. So we will first, and we have been asked to prepare profit and loss appropriation account. So IUC और salary दो ही हमारे expense हैं, इसमें भी हमारे, तो easy question पड़ेगा आपके लिए करने में. So let us see question number 15. Here हमें mention नहीं है, so we will simply start directly by profit and loss account. Net profit. Net profit given in the question is how much? 4 lakh rupees. तो यहाँ पर एक point learning आपके लिए आ रही है. What is the learning? अगर हमारा profit कभी भी किसी भी appropriation के बाद given है, तो हमेशा उस appropriation को उसमें add back करो. मतलब कौन सा appropriation के बाद given है? Absolutely right. Z salary. Z salary is कितना रुपीस? It is given clearly 20,000 per month. So 20,000 per month means for the whole year. For the whole year, it is going to be how much? It is going to be 2 lakhs, 24 into 20 into 12, 2 lakh 40,000. So 6 lakh 40,000 rupees का salary total profit आप दिखाएंगे.
अगर प्रॉफिट किसी भी एप्रोप्रिएशन के बाद है तो उस एप्रोप्रिएशन को उसमें ऐड कर दीजिए. बाय व्हाट प्रॉफिट वी शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑलवेज बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन. अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे भी रखा है तो भी आप उसे ऐड करेंगे, बिकॉज वी नीड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में व्हाट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन. और आफ्टर एप्रोप्रिएशन है तो आफ्टर को बिफोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक. ऑन द डेबिट साइड वी विल शो टू इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएशंस. कौन कौन से एप्रोप्रिएशंस हैं, पार्टनर एक्स वाई एंड जी. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर सीखने वाली है वो क्या है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स थे तो वी विल बी राइटिंग करंट अकाउंट. ये करंट अकाउंट क्या है इसकी डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट सेशन, बट सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड these items are transferred to current account, not to the capital account. Let us calculate what is the percentage given, 10%. So 10% of 5 lakhs is 50,000. Again it is 50,000 because X and Y have contributed 5 lakhs and partner Z has contributed 2 lakhs 50,000. That means 25,000. So it will be 1 lakh and 25,000 का IOC. Thereafter we will write salary. अब यहाँ आपको सीखने की बात है कि here you have to be very very particular in writing the things. So that salary will be how much? That salary. Instead of writing that salary, simply write down to salary and transfer कर दें partner that के कहाँ पर current. Yes, how much is the salary? 2,40,000. Which we have already added. अब यहाँ पर खर्चा ऐड हो गया. कुछ स्टूडेंट की सोचनी है कि अगर हम यहाँ ना दिखाएं, अगर हम यहाँ पर ये ऐड ना करें, यहाँ पर सैलरी ना दिखाएं तो चल जाएगा. इट यू विल गेट द राइट आंसर, बट प्रेफरेबली यू शुड ऐड इट बैक. ओके, एंड देन वी विल कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो ही एक्सपेंस हमें दे रखे थे. तो अकॉर्डिंगली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू एप्रोप्रिएशंस वी विल गेट द आंसर 6,40,000 and then we will get the profit. What is this profit known as? Net divisible profit, which we will transfer to current accounts. X current account, Y current account and Z current account. We will distribute the profit among these partners in their profit sharing ratio. फटाफट कैलकुलेट करें और बताएं कि what is the answer coming up now. So 6,40,000 was the amount, and from 6,40,000 we will subtract 125,000 and 2,40,000. We will get 2,75,000 as divisible profit, which we will divide in which profit sharing ratio? In their agreed ratio, which is 2:2:1. So 2/5 share he will get 2,75,000 ka. That will be how much? That will be 1,10,000. And same Y will get, and obviously the third partner will get half of this because his share was 1/5, 55,000. So 2:2:1. That means 2/5, 2/5 and 1/5. 2 plus 2 plus 1 is 5. So 2/5, 2/5 and 1/5. This you know very well already, but I thought I should share it with you. Okay. Then we solve the next question. 16th. X, Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capitals of 8 lakh, 6 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary 60,000, which has not been withdrawn. Yeah, means the partner has not withdrawn it further. It is still in the partner's capital account or current account, depending upon the situation. Capital is given, so हम इसे fluctuating मानेंगे. There is no current account. Profit for the year before interest on capital, but after charging Y salary is 2,40,000. Simple to understand. Salary को क्या कर देंगे? Add back कर देंगे, and we will get the correct net profit. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager. Manager commission है, क्या बताया था आपको? Manager commission is an charge. देखिएगा on the top I explained when I explained the concept of charge and appropriation. देखिए IOL, interest on loan, rent payable and manager's commission is a charge. और हर चार्ज को हम क्या करते हैं? We subtract it from the profit and loss appropriation account. देखिए टॉप पर क्या लिखा है रेड कलर में, IO partner loan and rent payable to partner and manager commission भी अगर हमको given है तो that also we need to subtract from the net profit. तो ये तीनों चीजें ही हमारी यहाँ से माइनस होती हैं. If you want to know, manager commission is also a charge. These three items are supposed to be subtracted, right students? So we will solve the question in a very fast mode because these are going to be easy questions. सबसे पहले हम लिखेंगे by profit and loss account net profit. Net profit कैसे निकालते हैं by the way? How to calculate net profit children? Please let me know. 2,40,000 में हम क्या ऐड कर देंगे? Whose salary? Y salary we will add. Y salary and Y salary is how much? Because हमें net profit जो होता है वो हमेशा before appropriation होना चाहिए, and before appropriation means we must add back any appropriation which is already subtracted from the profit. So 60,000 ऐड कर देंगे. This is net profit before appropriations 3 lakh rupees का. But we will minus manager's commission. अब सवाल ये आता है कि मैनेजर कमीशन कितना परसेंट देना है? That is 5%.
5% वी विल कैलकुलेट ऑफ दिस 3 lakhs। देखिए यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाला है कि प्रॉफिट हमेशा वो लो जो कि अगर किसी एप्रोप्रिएशन के बाद दे रखा है तो उसको ऐड करके लो। तो मैनेजर कमीशन वी विल कैलकुलेट 3 लाख का 5%, नॉट 2,40,000 का 5%, वो तो एक आफ्टर एप्रोप्रिएशन। मैनेजर कमीशन हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया जाता है, तो बिफोर प्रॉफिट वाले को निकालने के लिए हमने सैलरी को ऐड कर दिया और 3 लाख का 5% वी हैव कैलकुलेटेड विच इज 15,000। तो 3 लाख 2,40,000 प्लस 60 तो करना ही था, 15,000 हमने कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर। फाइनल प्रॉफिट इज 2,85,000। राइट चिल्ड्रन, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, ट्वाइस यू हैव टू प्रैक्टिस सो दैट आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए फॉर द एग्जामिनेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल राइट, हमारे को दो एक्सपेंस दे रखे हैं वापस से, तो वी विल राइट बोथ द खर्चास। नंबर वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में हम इसको पोस्ट कर देंगे। we have to calculate what percentage is given to us, 5%। 8 lakh का 5% है, 6 lakh का 5%। 8 lakh का 5% is 40,000, 6 lakh का 5% is 30,000। साथ साथ सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट एंड देन डूइंग इट। तो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज टू प्रैक्टिस इट साइमल्टेनियस। सैलरी हम दे रहे हैं किसको, टू द पार्टनर वाई, तो वाई की सैलरी हमें गिवन है विच विल ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। जो सैलरी आपने यहाँ लिखी थी वही सैलरी आप यहाँ पर डेबिट कर देते हो, क्योंकि प्रॉफिट अब बिना सैलरी के आ चुका था वहाँ पर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। टोटल करेंगे 2,85,000। बस आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट जो आप लो वो हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मगर आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए। ओके, रिमेनिंग कितना बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। आप एक काम भी कर सकते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट लिखकर, अब आपको जरूरत ही नहीं है कि नाम के आगे आप कैपिटल वर्ड को दो दो बार लिखो। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और आप यहाँ एक्स और वाई लिखकर छोड़ सकते हैं, नो बडी कैन कट योर मार्क्स। तो 70, 60, 130, and 130 means 155 is the profit, which we will distribute in the ratio of 3:2, 3/5, 3/5 of 1,65,000 gonna be 50, 31 into 3 is 93,000, and obviously 2/5 ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 93 and 62,000। डन, simple to understand, there is no problem anywhere। 16th question we have done। 17th you can see Atul and Merch on our partner sharing profit in the ratio of 3:2। बैलेंसेस गिवन है हमें 1 अप्रैल को। लोन अकाउंट अतुल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लायबिलिटी है, क्रेडिट रेफर्स टू लायबिलिटी। एंड मिथुन 2 लाख, ये लोन जो है हमने गिवन है, दिस इज लोन टेकन है, दिस इज लोन गिवन और एडवांस्ड। तो ये क्या है, हमारी एसेट। एक लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और एसेट पर इंटरेस्ट मिलता है, बी वेरी केयरफुल। इट वाज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% ऑन लोन्स टेकन एंड लोन गिवन। तो 8% लोन पर इंटरेस्ट देना भी है और लेना भी है। दोनों हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, यानी कि हमारे चार्जेस हैं और हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट में ही एडजस्ट कर देंगे, एप्रोप्रिएशन में अलग से नहीं दिखाएंगे। पार्टनरशिप डीड ऑल्सो अलाउ आईओसी 10% एंड आईओडी वॉज चार्ज 5,000 ईच। आईओडी हमको गिवन है, पहली बार देखिए सामने आ गया, दोनों का निकाल के दे रखा है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, यानी कि कोई भी एप्रोप्रिएशन अभी तक प्लस माइनस नहीं हुआ है। 2,28,000 का नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, पी एंड एप्रोप्रिएशन हमें बनाना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट लर्निंग। क्वेश्चन 17 विल बी डूइंग इट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट में जबरदस्त कैलकुलेशन आएगी, should be a great learning for everyone। तो सबसे पहले हम छोटी सी एक कैलकुलेशन कर लेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन, देयर आर टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, अतुल के लोन पर इंटरेस्ट हमने पे करना है, which is showing a credit balance, and it is going to be how much, this you have to calculate। on Atul's loan how much, Atul's loan is 3 lakh rupees, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अग्रीड है, कितना परसेंट पर अग्रीड है, 8%। वेरी राइट। मंथ्स के बारे में कुछ कह नहीं रखा है क्योंकि 1 अप्रैल को ही दे रखा है, देयर इज नो नीड टू टेक। ओके, 24,000 निकल कर आएगा अतुल का, जो कि हमें माइनस करना है प्रॉफिट में से, एंड इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन जो कि हमें नेट प्रॉफिट में प्लस करना है, बीइंग एन इनकम फॉर द बिजनेस। ओके, दिस इज डेबिट वाला लोन, तो इनकम है, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस, और ये हमारी इनकम होगा जो हमारा निकल कर आएगा। इट इज गिवन 2 लाख रुपीज, डेबिट बैलेंस गिवन था, तो 2 लाख का 8% इट इज 16,000। तो टू इंटरेस्ट, वो द इंटरेस्ट वी हैव गॉट, दैट्स ऑल। यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का, 24 एंड 16। तो प्रॉफिट आपको गिवन है 3 लाख रुपीज बिफोर चार्जिंग एनी खर्चा, तो 2,28,000, 2,28,000। तो 2,28,000 में हम क्या प्लस कर दें और क्या हम माइनस कर दें, प्लस तो कर दें हम इसका, द इंटरेस्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड 16,000 एंड 24,000, तो 16,000 ऐड कर दीजिए आप, दिस इज गोइंग टू बी 2,44,000, माइनस कर दीजिए इसमें से आप 24,000, which is going to be maximum 20,000 rupees।
So this is how we are going to show the amount. ये क्यों प्लस करा गया? इट्स एन इनकम, ये मिथुन से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारा खर्चा है बिकॉज हमें पे करना है अतुल को, दैट विल बैलेंस। ओके, क्रेडिट मींस लायबिलिटी का बैलेंस और डेबिट मींस एसेट का बैलेंस। ये था इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। रेस्ट क्वेश्चन इज सिंपल, आई होप यू कैन सॉल्व योरसेल्फ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन टू अस, एंड इन दिस क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे थे, अगर आप ध्यान से देंगे तो कैपिटल फॉर गिवन फिक्स्ड। कैन यू प्लीज लुक इनटू द क्वेश्चन? थोड़ा ही छोटा सा छिपा कर लिखते हैं ये लोग, सो दैट you should not be able to see it and you do some mistake. तो capital account fix दे रखा है, तो simply we will post it to their current accounts. तो अतुल के और मिथुन के करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, ना कि उनके कैपिटल्स में। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, वो बच्चे बहुत करते हैं, और एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में, इंटरनल्स में सबसे ज्यादा एग्जामिनर इसी चीज को देता है। इट्स गिवन टू अस कैलकुलेटेड 5,000 ईच, दोनों का दे रखा था, विल पोस्ट इट 10,000 रुपीज, एंड ऑन द डेबिट साइड विल बी राइटिंग द appropriations interest on capital which we are undoubtedly going to the Atul and Mithun's current account. तो अतुल के करंट अकाउंट अतुल का ट्रांसफर कर देंगे आईयूसी, और मिथुन के अकाउंट में मिथुन का आईयूसी कैलकुलेट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में पढ़िए, 5 lakhs एंड 6 lakhs, और परसेंटेज कितनी गिवन है 10%, दैट मींस 50,000 एंड 60,000, टोटल कितना हो गया 1 lakh एंड 10,000। डन। देयर आफ्टर कोई सैलरी गिवन नहीं थी, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। तो आपको अब बार बार अतुल और मिथुन के नाम के आगे करंट करंट लिखने की जरूरत नहीं है, टू अतुल एंड टू मिथुन, simply you write it down. We'll calculate the profit, which is net divisible profit, 2 lakhs and 30,000, and 2 lakh 30 में से 110 अगर हम माइनस कर दें, how much is left to be distributed? 1 lakh and 20,000. Done. What is the profit sharing ratio of Atul and Mithun? It is 3:2. So obviously 5 से काटेंगे तो 24, that is 72, and 24 into 2 is 48,000. We'll simply get the answer. 17th question is done. Thereafter, you can see the 18th question. Rima and Seema are partners. Rima and Seema are partners, and what is given to us? They are equal partners. The partnership deed provided both Rima and Seema to get a monthly salary of 15,000 each. दोनों को सैलरी मिलेगी 15 की, 15 into 12 is 1,80,000 दोनों को मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम, दोनों को आईयूसी एग्रीड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेगी फॉर्म 10% पर एनम के रेट से। देयर कैपिटल्स आर 5 lakhs ईच, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट से ही हो जाएगा। तो कैपिटल्स आर 5 lakh ईच, दोनों का 10% हम कैलकुलेट 5% कैलकुलेट करके निकाल देंगे। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हमको दे रखी है 60,000 ईच। फॉर्म को लेकिन क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने रुपीज का, 1 लाख का। तो हमने क्या बताया था, इंटरेस्ट कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन, दोनों हम तभी पे करेंगे जब फर्म को प्रॉफिट अवेलेबल होगा। यहाँ तो फर्म को प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फर्म इज ऑलरेडी इनटू लॉसेस, फर्म तो लॉस में जा रही है, तो देयर इज नो पॉइंट कैलकुलेटिंग आईओसी एंड सैलरी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपली हमें तो लॉस को डील करना है इस क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख रुपीज का लॉस है और आईओडी कैलकुलेट करना है, बट इसमें काफी कुछ पॉइंट्स की लर्निंग है, दैट इज व्हाई आई थॉट वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन 2025 की हमें डेट गिवन है, हमको लॉस गिवन है स्टूडेंट्स, तो वी विल बी राइटिंग लॉस हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहली बार आप देख रहे हो the loss is coming in the question, net loss is given. So how much net loss is given? 1 lakh rupees. और फॉर्म के पास बस एक ही इनकम क्वेश्चन में गिवन है, हम आईयूसी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते आईयूसी? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कैन नॉट बी पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स, कैन नॉट बी, ये नोट है, लर्निंग है इस क्वेश्चन की, cannot be paid to the partners, cannot be paid to partners as the firm has suffered loss, as the firm has suffered loss, firm has suffered loss, there is no profit available. Number 1 point clear. Number 2, interest on drawing एक इनकम होता है, वो हमारा आएगा, अगर फर्म को इनकम होगी तो दैट वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें हमें गिवन है कि दे हैव विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर 60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, प्लीज नोट इट डाउन। एवरेज बेसिस, एवरेज बेसिस मींस दैट इज 6 months when date of drawing is not given, 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 date of drawings is not given। तो क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, we will simply calculate IOD for 6 months। ये एवरेज बेसिस वाला रूल भूलेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी विल कैलकुलेट फॉर बोथ द पार्टनर 60,000 का
कितना परसेंट बोल रहा है वो आपसे? 10% चार्ज करेंगे. So रीमा एंड सीमा बोथ विल गेट. रीमा 60,000 का 10% रीमा के कैपिटल में जाएगा. रीमा कैपिटल 60,000 का 10%, मगर 6 months हमें बाय डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. 3,000 रुपीज. देन वी विल ट्रांसफर टू सीमा कैपिटल. सेम और दोनों की ड्रॉइंग 60,000 ईच है. 3,000. तो ये इनकम हम दिखाते हैं, एक्सपेंस हम कभी नहीं दिखाते अगर हमारे को लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो. इनसफिशिएंट प्रॉफिट पर क्या रूल एप्लीकेबल है, दैट आई विल आल्सो कवर अप इन द अपकमिंग सेशंस. तो लॉस ही आ जाएगा बिजनेस को टोटल अगर हम देखें तो 1,00,000 रुपीज हमारा टोटल लॉस था, उसमें से 6,000 की हमको इनकम हो गई. टेल मी चिल्ड्रन, हाउ मच इज द लॉस लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? नेट डिविजिबल लॉस. ओके, तो बाय लॉस वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स. लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ रीमा एंड सीमा. तो डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे ये लॉस जो निकल कर हमारा आएगा बिटवीन द पार्टनर्स. 94,000 साफ दे रखा है क्वेश्चन में, दे आर इक्वल पार्टनर्स, वी विल डिवाइड इट इक्वली बिटवीन बोथ द पार्टनर्स. डन. So simple to understand. Next question you can see quickly. The 19th question. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capitals, very very important to note down, is their fixed capitals, यानी कि current account से होगा. On 1st April were 8 lakhs and 10 lakhs respectively. Their drawings during the year were 50,000 and 1 lakh rupees. 50,000 and 1 lakh rupees during the year दे रखा है. तो IUD अगर लगाना होगा तो कितने मंथ्स का लगाएंगे? 6 months. Very good. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Whether the firm earns profit or incurs loss. अब firm को profit हो, loss हो, लेकिन firm क्या चार्ज करेगी ही करेगी हर हालत. What the firm is going to charge, children? The firm is going to charge interest on capital. Interest on capital firm charge करेगी ही करेगी. यानी कि interest on capital is not considered in this question as an appropriation, it is considered as charge. और charge का वही treatment है कि profit से क्या कर देना है हमने, simply minus. As simple as that. ये नया point है इस question में. Net profit for the year before any appropriation is 1,20,000. So what is the new thing in this question is IUC is to be taken as charge, not as an appropriation. Firm की अपनी मर्जी है, firm जो इसको consider करे, it's all up to the firm. So profit हमको given है question के अंदर. How much is the profit given? 1,20,000. The profit and loss is given 1,20,000 rupees. और salary to the partner जो हमारा interest on capital है, sorry, that is considered as a charge against profit. तो भानु और प्रताप की कैपिटल्स कितनी है? 8 lakhs and 10 lakhs. और 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो 80,000 and 1 lakh रुपीज आता है, यानी कि 1,80,000. सो IOC अगर हम कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे कहते हैं, तो 8 लाख का 10% इसका 80,000 और दूसरे वाले पार्टनर का आ रहा है निकल के 10 लाख का 10% 1 लाख. तो 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है और अवेलेबल प्रॉफिट है 1,20,000. IOC कभी भी हम यहाँ नहीं लिख सकते माइनस करने के लिए, ओनली अंडर वन सिचुएशन व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज एन चार्ज. तो अब हमारा तो लॉस हो रहा है, तो लॉस की सिचुएशन में आप देख सकते हो कि 1,80,000 इज एक्सीडिंग द प्रॉफिट अवेलेबल. तो हम अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट ना दिखाकर फॉर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देगी एंड फॉर्म विल शो लॉस. 1,20,000 minus 180,000 and 1 lakh is 1,80,000. This is what? Interest on capital, which is considered as a charge, which the firm has considered as charge because the firm said loss or profit हो देना ही देना है पार्टनर्स को. तो इट विल बी 60,000 एज ए लॉस. अब हम क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं दिखाएंगे बिकॉज फर्म को शुरुआत ही किससे हो रही है? लॉस. लेट्स सी फर्दर कि आगे हमारा क्या निकल के आता है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स we will calculate for 6 months and we will close the question. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है हमारा भानु प्रताप का, दोनों का 10% सॉरी 15% लगाना है 6 मंथ्स के लिए. तो भानु का कैलकुलेट करेंगे. भानु के करंट अकाउंट में जाएगा पैसा क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं. तो भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप करंट कैलकुलेट कर आप देख सकते हो कितना कितना आ रहा है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ड्राइंग्स गिवन है हमें कितनी? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000 एंड 1 लाख. तो 50,000 का 15%, 50,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, इट इज कमिंग टू बी 3750, 3750. सेकंड वाले पार्टनर का निकल आ रहा है 1 लाख का 15%, डबल ही हो जाएगा इसका. फॉर 6 मंथ्स we will get 7,500. So both the interest are available. So we'll just simply total it and post it on the credit side 11,250 from their current accounts का total. अब आप देख सकते हो कि debit side is showing 60,000 and credit side is showing 11,250. 60,000 minus 11,250 is 48,750 rupees by loss transferred to current accounts. Loss transferred to current accounts. So Bhanu and Pratap, they are equal partners. We will post it
भानु एंड प्रताप, बार बार करंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने टॉप पर करंट लिख दिया. They are equal partners. The remaining profit is 48,750. So we'll get the correct answer. हाफ कर दीजिए इसका बता. 24,375, 24,375. This is how the appropriation concept has come to an end. Capital account वाला concept we'll study in the next session. But इसको आप बार बार देखो, समझो, कोई point समझ में नहीं आए तो please discuss. And still, if you have doubt, please write it, and I'll try to give you the best of solutions so that none of you should face problem. Profit and loss appropriation account concept is over. Have a great time. All the best. Thank you.